अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग मौजूद हैं एक नए सेशन के साथ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड आई एम श्योर आप लोग सारे कोविड-19 के हवाले से अपनी प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। जो ये मैयर सबको पता ही है, सबके फिंगर टिप्स पे होंगी। एंड आई एम श्योर कि सारे उसको ओबे भी कर रहे होंगे। आज हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। एंड मैं आपका नाम उनको बताऊंगा तो आप सारे एकदम से खुश जरूर होंगे। ना सिर्फ वो इतने टैलेंटेड पर्सन है, बल्कि इतनी प्यारी पर्सनैलिटी है कि हर बंदा उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं शफात हाशमी साहब। शफात भाई, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam wa rahmatullah. How are you, Asim bhai? I'm good. Shafat bhai, first of all, thank you very much for giving time for joining us. Thank you very much. Not सबसे much पहले of बताइए आप कैसे हैं? very well, keeping good. All things are going as per usual, माशाल्लाह. and adopting change. Great, great, great. Shafat bhai, what would you say about the whole situation right now? I think we are living in unusual times, and it's definitely very challenging. I mean, to me, it's more like a war. I mean, अगर 65-71 की हम war भी देखें, तो उसमें भी एक किस्म का पूरा लॉकडाउन हो जाता है। सिर्फ फर्क इतना है कि उसमें जरा हमें बॉम्ब शॉम्स की और एयरक्राफ्ट की आवाजें आती हैं और गन शॉट्स, यहाँ पे बस वो आवाजें नहीं आ रही। बाकी everything is pretty much the same. And we need to understand that yes, we are in a state of a war at a global level. True. So whatever precautions we need to take, we must take it both for our life, for our health, for our well-being, and for our businesses, economy, and for our earnings. Definitely. Shafat bhai, as you specialize in marketing, so the first question that I would like to ask you is that what do you think are the challenges in context of marketing we will face after this issue? Marketing is a support system for sales. True. Now, since the consumer sentiment and investor sentiment is extremely low, True. and there are no transactions going on, especially during a period of lockdown, and essentially due to the uncertainty that businesses and people are facing. I mean, people don't know whether they're going to be on jobs or not. So keep all of this in perspective. I think doing any kind of marketing at this point of time is completely meaningless. Because even if you market, let's say, even if you market online, even if you market digitally, the point is that the customer and the consumer is not out there. The products which are their needs is something which they are striving for, and the rest of the money everybody's keeping it Safe, for themselves. safe with them. Yeah. Absolutely, for the rainy days. True. So due to uncertainty, anything which is related to fashion or wants or travel, leisure, luxuries of life, even dining out and, home food deliveries, all the rest of it is pretty much at a halt. So at this point in time, I definitely do not recommend any business that they should be spending any money whatsoever on marketing. I think if there's any money that anybody should spend, should be on maybe developing their skills, finding out the blind spots in their personalities and trying to fill those up. True. Trying to improve their understanding of the relationships, increase and learn. I think this is a learning time period for all of us. Definitely. Shafat bhai, again, as you specialize in the area of digital marketing and the digital side, so how do you think the digital era has played a different role in this current time, and what would be the impact in the coming time? Dekhiye, a majority of the businesses globally have not actually embraced digital. And let's talk about the regions, particularly the developing countries like Pakistan, where we have 57 million smartphone users. But then if you look at most of the mainstream markets, like the main bazaars, like Shalam Bazaar or Tariq Road and all these big businesses, billion rupees. They are very far from the digital age. Very far from digital age, and frankly speaking, they must embrace the digital world. And frankly speaking, same is the case with a huge continent, which is Africa. Africa is yet to embrace digital. A lot of mainstream businesses are yet to embrace digital. I mean, even if I look at the Middle East market, not everybody has moved on to digital. A lot of companies, even in Turkey, a lot of SME sector has not moved to digital, and they do not have either the skills or they have not come across the right resources. They do not understand. They haven't adopted to it. So with this current lockdown, I think what they do have the time to actually have and create a digital presence. But again, as I've said, you can create a digital presence right now
but I would not suggest that you should actually go around spending money on media marketing to push your product across for sales, because right now sales is not something which is going to happen. Achha, this is what you've mentioned is just for the time right now, and let's suppose that the issue gets settled down quickly. What do you suggest? इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? What should be the marketing medium? Marketing medium कौन सा effective रहेगा? And what could be the effective marketing strategies in the coming time after COVID-19? देखिए, it depends from sector to sector. You know, if we take up the fashion and apparel sector, definitely they have to shut down a lot of their retail, a lot of their physical presence, and they need to reinvest that money. They need to come up with newer models for trying out or feeling the fabric. I think it has to move away from more of a digital, just a delivery model, to something which is more on a trial model as well. Okay, Okay, maybe I, ordered 7 different shirts, and I want to try out those 7 shirts and then pick up one and just bite off right at my doorstep. So, these models have to change. Retail has to be more flexible and more moving. The consumer basket has essentially changed. I mean, people, for example, are not really looking for detergents which save the colors or add more whiteness to your shirt. They're actually looking which kills 99.9% of germs. So true. advertisement from a creative communication angle will completely change. People will go to restaurants and cafes which are more clean True, compared to those who have great taste. true. So, this whole thing of hygiene, cleanliness is something which is going to pick up. Now, moving Definitely. further, when we talk about 3-4 months down the lane, देखिए market will not pick up even until 6 months, because अगर आप किसी भी अगर let's say कहीं पे strike भी हो जाए and if the business is shut down for even a week, for them to reopen, for them to come back into that mindset, for them to reset their cash flows, for them to renegotiate the banking lines, because a lot of our industry has banking lines, and they have to sit down with the banks, renegotiate the whole thing, understand what's happening in the future. So it's a dynamo effect. Now, if we look at this dynamo effect, ultimately, some one way or the other, I think it's going to take another 6 to 7 months. By Q4, early Q4, Q4, or end of Q3 2020 is when businesses might pick up, True, only true. if this COVID-19 is somehow contained in the next 6 weeks. So Wuhan has, I mean, China, it's a big, huge country with a lot of Definitely, resources. definitely. तो 60 days तो उनको लॉकडाउन करके सारा कुछ करने के बाद अपने आप को सेटल करने में लग गया, और अभी तक their economy has not actually revived. So they It are will looking take at time. It will take time. it, right? So countries like Pakistan, Italy, and other developing countries, if China has taken 90 days and still not recovered out of it, I think we are looking at least 120 days to be fair, or even more. Exactly. अच्छा, Shafaat bhai, normally in Pakistan, हमारा जो mostly business है, that is state owned, and state does not understand the digital proper उसकी advertisements होती है उसको proper समझ नहीं सकते. They take it as a cost. So definitely, it's not a tangible thing. So how would you, in your expert opinion, what do you suggest? कि उनको कैसे समझाना चाहिए? How can we convince the local owners the importance of digital marketing? They are believers of asset-based business models. They believe that we have more real estate, we have more inventory, we have more cash in our bank, and we are a great businessman. And they do not consider digital marketing as an investment into business, but they consider it as an expense. Now, the mindset has to change. Marketing is actually an investment. ब्रांड मार्केटिंग जो होती है, ब्रांड पोजिशनिंग जो होती है, डिजिटल प्रेजेंस करना, आपने अपने एक वेब पोर्टल बनाना है, वेबसाइट बनानी है, आपने एक अच्छी प्रोफाइल बनानी है, आपने अपने ब्रांड को रीडू करना है, उसकी एक अच्छा क्रिएटिव बनाना है, दिस इज इन्वेस्टमेंट इनटू द ब्रांड. अब It जो is. आप मीडिया स्पेंड करते हैं या जब कोई प्रमोशन लगाते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री बंडल ऑफर, 1 to 3 affinity marketing offers, whatever offers you do, that is something which is directly related to sales, and it must have an ROI attached to it. Now, Definitely. now the state only understands any promotion, anything which has an ROI attached to it, and they try to push it as hard as possible कि यार ₹1 लगाए बगैर भी हमें sales मिल जाए. These are बिल्कुल. the people who don't even train their sales team. Now, let's remember that even the sales training will completely change in the future, because अब हमें physical sales से tele sales के ऊपर आना है या online sales के ऊपर आना है. So online sales staff or online किसी services को या किसी product को बेचना या real estate को बेचना is actually more tough, because you're not ready face to face or in front of each other physically to sell out a product.
and getting people to come online and do a video call with you and, take all the rest of it is definitely very, very different. So ये सारे dynamics change हो जाएंगे. सही. अच्छा शफात भाई, जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग की बात की, अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप इन दोनों को कैसे रिलेट करते हैं इस टाइम में कि व्हाट इज द रेलेवेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, व्हिच इज मोर इफेक्टिव मीडियम राइट नाउ? देखिए, TVCs or radios have taken a bad hit, not only now but for the last 3 years. They have been in a bad position globally. Print जो है वो almost यानी कि बिल्कुल ही चला गया है, और print is no more there. At least for the last 4 to 5 years, people are not really advertising in Definitely there. So yes, people have moved to digital. Channels जो हैं वो change हो गए हैं because the consumer eyeballs have shifted. They have other things to look at. Outdoor was something which was still there because people were traveling, and outdoor was still relevant for a lot of brands. But outdoor has suddenly come to a halt because of this. So I think moving further, it is about really creative digital marketing and creative content. हमारे पास जो mainstream media होंगे, for example, we're doing a Zoom call. I think we should have a way where people will actually sponsor such videos, for example, and we might add their logo, or maybe so it's more PR based. Facebook marketing would be out there, YouTube marketing would be out there, and I'm sure a number of other media will also pop up soon on which people would love to market. So the marketplace है वो बिल्कुल shift हो जाएगी, change हो जाएगी. Instagram is doing great, and multiple other channels are doing great. So जो हमारे big five हैं इस वक्त digital के अंदर, उन मीडिया के अलावा भी there will be more media popping up, more specialized media popping up, and I think marketing will become even more targeted. For example, there are groups on Facebook. So the people would just like to target a certain group compared to just a certain page, because they want people of a certain mindset, a certain psychographic, certain geographic segments, and all the rest. So target markets, everything will be redefined. Furthermore, I think consumer will also become frustrated enough, and unless they do not find real value, and unless they do not understand that something that they're going to purchase is a real need for them, I don't think that there is a spending pattern that we will see in the consumer moving forward. So therefore, whatever media we spend, whatever we do, has to be very carefully planned and very carefully looked at. अच्छा शफात भाई, यू आर इनटू मल्टीपल बिजनेसेस, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में भी देख रहे हो, एसेट मैनेजमेंट की साइड पे भी देख रहे हो, एंड प्लस यू आर प्रेजेंट ग्लोबली आल्सो. सो ग्लोबली हाउ डू यू सी थिंग्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट? देखिए जी, there is devaluation going on. In one of the greatest recessions, long back, 2008, we were looking at somewhere around 12% to 14% unemployment. As we sit today, we are already sitting on 15 to 16% unemployment rate. So over the last 3 months, I personally foresee this unemployment rate to go all the way up to 25%. 25%, which is actually very high. Yeah, that's 1/4 of the total population. Because let's try to understand कि robotics भी आएगा, AI भी आएगा, और वो आपकी बहुत सारी manufacturing को, बहुत सारी चीजों को replace कर देगा. बहुत सारी चीजें जो वो automate हो जाएंगी. We don't need a huge task force even for sales, because bots are going to actually do the sales. And based on the data, bot उनसे questions करेगा, question answers, and through AI they can offer a service or a product. So we don't really need people for all of that. So a lot of people will actually be jobless, and जब joblessness होती है तो obviously crime rate बढ़ता है. जब crime rate बढ़ता है तो आपकी security में investment बढ़ जाती है, और most importantly वो जो तबका होता है आपकी nation का, वो इतना vulnerable हो जाता है कि you can buy those people to do any kind of a terror act or anything that you wish them to do, even vote for the wrong person, and you can buy out votes because people are hungry. So what we are looking at right now is कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी. अभी तक हमें एग्रीकल्चर का इफेक्ट नजर नहीं आया. एग्रीकल्चर का इफेक्ट हमें थोड़े से बाद पता लगेगा, 2 महीने बाद, कि कैसे फूड चेन्स और फूड सप्लाई हमारी हर्ट हुई है, किस तरह से ग्रोसरीज के अंदर जो पैनिक बाइंग हुई है उसका इफेक्ट आपको अभी नजर नहीं आएगा. अभी तो इन्वेंट्री निकल रही है वेयर हाउसेस में. महीने 2 महीने के बाद पता लगेगा जब इन्वेंट्री पीछे से मैन्युफैक्चर नहीं हो रही थी और ज्यादा इन्वेंट्री जो है वो भी निकल गई है. ओके, सो हाउ पीपल आर गोइंग टू स्पीड अप द प्रोडक्शन, how we are going to contain this virus. So all of these things globally, if we look at it, we're looking at definitely a huge meltdown. To me, I think a lot of countries globally have used this pandemic as a scapegoat
to cover up their mess ups, especially what they've done in 2008. अगर अगर हम 2 मिनट में आपके और ले सकूं आपकी इजाजत से, हम थोड़ा सा आसिम भाई हिस्ट्री में जाएंगे. You know, 70s 80s में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया and people started putting up industries, agriculture के अंदर improvements आई, कंप्यूटर्स आना शुरू हुए. 90s के अंदर कंप्यूटर्स का दौर आया, you know, वो 386 486 आना शुरू हो गए, कोमोडोर आना शुरू हो गए, और वो पूरी मार्केट जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई सॉफ्टवेयर की और सारा कुछ. गेमिंग डेवलप हो गई 90s, अर्ली 90s के अंदर जब सेगा आ गई, निंटेंडो आ गई, and all these things came up and popped up. So there was a complete shift, and even in those times you would understand कि brands 80s के अंदर बनना शुरू हुए. Nestle, Unilever became global brands, Coke, Pepsi became global brands somewhere in the 80s, and that was the time branding and marketing actually picked up. So उस time के बहुत सारी workforce थी, उसको नए skills भी required थे, और वो जो graduates थे वो जज्ब हो रहे थे अपनी economy के अंदर. अच्छा, उसके बाद हमारी मोबाइल फोन की मार्केट आना शुरू हो गई लेट 90s के अंदर, अर्ली 2000 के अंदर, एंड द होल मोबाइल थिंग अर्ली 2000 पिक्ड अप. इसी दौरान 2000 से लेकर 2008 तक रियल एस्टेट सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर ने एक ह्यूज बूम लिया ऑल ओवर द वर्ल्ड. यू नो, ये बहुत सारे ऑयल सिटीज बन गए, कुवैत, दुबई, रियाद, यू नो, ऑल दीस प्लेसेस, यू नो, कतर, दे ऑल became big cities, and same went with a lot of construction going on in US as well. अब in every 3 to 5 years कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आ रहा था इस दुनिया में where people were spending money and the capitalistic cycle was actually, the flow did not break. 2000 जो कि essentially mortgage और housing sector in the US की वजह से हुआ, जिसमें उन्होंने उनको बेल आउट भी किया, we all know it. मुझे ये बता दें कि 2009 से लेके आज 2020 11 साल में एक साल कोई शख्स मुझे बता दे जो कि ऐसा गुजरा जिसमें आप कहेंगे हमने बूम देखा इकोनॉमी में. किसी एक सेक्टर में, not a single sector has actually experienced a boom. People went on creating malls, people went on growing, but 2019 हमारे सामने रिटेल फैशन का भी, FMCG का भी, ब्रांड्स का भी, ऑनलाइन शॉपिंग का भी, फिर ये वेंचर कैपिटल का एक इशू खड़ा हुआ, एप्स आना शुरू हुए, क्रेजी किस्म की वैल्यूएशन शुरू हुई, उसके अंदर कुछ पैसा जाना शुरू हुआ, बट वो गिमिक इट डिड नॉट वर्क. You know, that thing just did not work, although it was promoted at a global level through even TV shows like Shark Tanks and many others. But this thing didn't work, and ultimately this cycle had to stop. And 2020, it has actually, we have seen that it's a stop. Petrodollar जो है, पेट्रोल के नाम पे बहुत सारी जंगें हुई. इराक की जंग हुई, लीबिया की जंग हुई, यू नो, सीरिया में चल रही है, यमन में चल रही है, you know how the oil war has been and what was the role of OPEC. अब पिछले दिनों आपको पता है 2-3 साल पहले ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, वो सारा मसला खड़ा हुआ, फिर ऑयल प्राइसेस गिर गई, फिर मसला खड़ा हो गया, फिर सऊदी के पास इस वक्त they are sitting on in a huge ocean of oil which nobody is a buyer. So Russia has played their own games. And then there was an economic war going on trade war going on between US and China. इन सारी चीजों को पर्सपेक्टिव में डाल के अगर आप देखें तो 2020 पैंडेमिक जो इस वक्त क्रिएट हुआ है, there is somebody who's the actual beneficiary out of it. So हो क्या रहा है कि हम लोग जो जनता है वो तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट में से गुजर रही है. This is the grand scale social experiment which we are experiencing. जिसमें everybody's in lockdown and people are trying to realize and understand what are we here for and what is it that we are supposed to do and how long can we sustain ourselves. So एक social experiment आ गया कि 20 दिन अगर पूरी दुनिया जेल में बंद हो जाए, होम अरेस्ट हो जाए, हाउस अरेस्ट हो जाए, तो वो कैसे बिहेव करेगी. So it's a behavioral change. दूसरी चीज जो हमारे सामने आती है वो सोशल एक्सपेरिमेंट के बाद है ग्लोबल इकोनॉमिक रीसेट. सो पेट्रो डॉलर इज गोइंग टू शिफ्ट इनटू अ डिजिटल हेल्थ केयर डॉलर एंड हेल्थ केयर विल बी अ प्रायोरिटी. आप किसी के पास भी चले जाएं आज दुनिया में और किसी नेशन के किसी बंदे से पूछे भाई किसको वोट दोगे, वो कहेगा हेल्थ केयर वाले को वोट दूंगा, जो हेल्थ केयर देगा उसको वोट दूंगा. आज आपको कोई बंदा ये नहीं मिलेगा वो कहेगा जो सड़कें बनाएगा उसको वोट दूंगा, या जो कुछ और करेगा, जो फैक्ट्रियों को मराद देगा या टैक्स कम करेगा उसको वोट दूंगा, कभी जो हेल्थ केयर देगा उसको वोट दूंगा, जो सिक्योरिटी की बात करेगा उसको वोट दूंगा. सो दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेना. So the investments moving further are essentially going into healthcare. ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एडमिशंस के लिए रह जाएंगे. जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं आईसीयू वगैरह के और जिनको सर्टेन डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट्स चाहिए और डिफिकल्ट ट्रीटमेंट्स चाहिए, ऑपरेशनल ट्रीटमेंट्स चाहिए, उनके लिए रह जाएंगे. बाकी जो रेगुलर
सारा कुछ है वो सारे का सारा टेलीमेडिसिन के ऊपर, टेली हेल्थ के ऊपर मूव कर जाएगा। अच्छा और शफात भाई, बिल्कुल मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इससे थोड़ा सा रिलेटेड ही है। दैट इज क्या स्किल सेट्स आप देख रहे हैं जो कि इन डिमांड होंगे इन द कमिंग एरा? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, इतनी ड्रास्टिक चेंजेस हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली जिस आपने भी बताया थोड़ी कम हो जाएगी, हम लोग सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज पे ज्यादा चले जाएंगे। सो वो कौन सी ऐसी स्किल सेट्स हैं जिनकी डिमांड अभी इंक्रीज होगी या क्रिएट होगी, जिनकी डिमांड? देखिए जी, नंबर वन, वी एज अ नेशन, I mean we can talk about globally as well, but especially if I focus on Pakistan, I think our nation needs to learn robotics. We need to be great at big data. We need to learn about AI. We need to understand about industrial machine learning. We need to talk about processes. We need to talk about new management procedures, new policies, new organizational structures, new motivational and workforce policies that has to be applied when it comes from a work from home culture. We need to talk about new marketing skills, especially when it comes to digital. I mean, आज के दौर में ये वो दौर नहीं है जब आप 10 मिलियन का, 20 मिलियन का, 50 करोड़ रुपए का एक एडवर्टाइजमेंट बना के टीवी के ऊपर फ्लोट करते थे 15 सेलिब्रिटीज को लेके। दिस इज नॉट दैट टाइम। ये टाइम वो है जिसमें आपको 5 लाख रुपए के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट बेहतरीन क्रिएटिव बनाना है, और उसकी लाइफ जो है वो 15 दिन से ऊपर की नहीं है यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर। सो अब वो बेसिकली टाइम व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है। पहले आपका एक एड बनता था टीवीसी के ऊपर व्हिच वाज अ लार्ज स्केल एड, अब हमारे एड्स छोटे बने करेंगे लेकिन फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ जाएगी। मजीद जी, एब्सोल्युटली द थिंग्स विल बिकम मोर एंड मोर टारगेटेड। मेरे हिसाब से कस्टमर सेगमेंट्स और भी ज्यादा डिवर्सिफाई हो जाएंगे और भी ज्यादा प्रोलिफरेट होके थोड़े से थिन हो जाएंगे, एंड पीपल विल बी लुकिंग एट मोर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट फॉर स्पेशलाइज्ड केसेस। एंड ये जो एक ड्रामा चल रहा था ब्रांड्स का, तो वही ब्रांड्स अपने आप को सस्टेन कर सकेंगे जो कि रियल वैल्यू दे रहे हैं। Basically this whole lockdown system has been more of a reality check. लोग घर बैठ के आज ये सोच रहे हैं कि यार मैंने जो पिछले महीने बिला वजह 25,000 या 50,000 रुपए की शॉपिंग की थी, क्या वो रेलिवेंट है इस वक्त या नहीं है, या आज अंडे डबल रोटी रेलिवेंट है, या आज मुझे इन्वेस्टमेंट करके अपने घर को खाना प्रोवाइड करना है और अपनी अम्मी की अब्बू की दवाइयां लेके आनी है जिसके पैसे मेरे पास खत्म हो गए। प्रायोरिटीज सो चेंज हो गई हैं आपकी। So priorities have changed and people have come down to the very basics of life. कि what are the basics of life जिसके अंदर मैं गुजारा कर सकता हूँ। I mean आप एजुकेशन सेक्टर को देखें, मेरे बच्चों की फीस आई तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया, and I was in a complete state of shock. मैंने कहा मेरे बच्चे 2 महीने से स्कूल नहीं गए तो मैं इनको फीस किस चीज की दूं। फिर उनका मुझे नोटिस आ गया तो 20% पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आ गए, सो वो 20% हम नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कर देंगे। बट द पॉइंट इज दिस कि जब आपके ओवरहेड्स ही नहीं है, जब हम आपकी फैसिलिटी नहीं यूज कर रहे, जब आपके टीचर्स मेरे बच्चों को ऑनलाइन ही लाइव सेशंस में नहीं पढ़ा रहे, और आप प्री रिकॉर्डेड मुझे वो वर्कशीट्स हैं वो ईमेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुद से प्रिंट आउट ले लें और बच्चों को पढ़ा दें, तो व्हाई द हेल शुड आई पे यू द फीस? सो ओवर द टाइम द एजुकेशन सेक्टर विल कंप्लीटली चेंज। हमारे बच्चों का एजुकेशन सारा ऑनलाइन हो जाएगा, लाइव टीचिंग की तरफ चला जाएगा, और ये बड़े बड़े एप्स बनेंगे जिसके ऊपर ये वर्किंग होगी। और अगर ये स्कूल्स कॉलेजेस बड़ी बड़ी चेंज जो पाकिस्तान में और ग्लोबली हैं, if they do not adopt to this change, I can guarantee a lot of people like me will actually be pulling out children from the school. And I am at the very worst to pull out my children from the school because it's just not worth it कि मैं अगले 3 महीने गर्मियों की छुट्टियों की भी फीस उनको भरूं। For Very what? true. Very Because true. I don't even know that they'll be going to the school or not. And then at the same time, the worst part is that the people who are working from home, I mean, the general culture is a culture of dishonesty. People are looking for excuses. So I fail to understand कि यार आपकी नौकरी लगी हुई है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और पहले से ज्यादा मेहनत करो, अपने स्किल्स को और भी एनहांस करो। अब जब तुम लोगों का 1.5 घंटे 2 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो गया है, आपकी फ्यूल कॉस्ट खत्म हो गई, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट खत्म हो गई, आपकी प्रोडक्टिव यूज करना चाहिए। तो यार अगर आपको आपका एम्प्लॉयर 15% 20% सैलरी कट का कह भी रहा है, तो यार accept that salary cut, retain your job, be smart, work even harder, work more number of hours. घर बैठ के आपने क्या करना है अगर काम नहीं करना, मुझे ये बताएं। So people who are making all these funny videos about quarantine and saying, oh, we are doing nothing, and they're making fun कि यार I've traveled from my bedroom to my kitchen and from my kitchen to my bedroom. God's sake, why the hell are you not working? You know, why are you not writing a book? Why are you not reading? Why are you not doing something productive? You know, I mean, you could do so much. I mean, a person like me, जिसने पिछले 12 साल से एक दिन भी छुट्टी नहीं की अपनी जिंदगी में, I have not taken a single day off for the last 12 years. So मैं जब घर पे बैठा हूँ तो I just could not sit.
For me, still there is no vacation, and this is no vacation. This is even more troubling, more challenging times, because True. कोई शख्स मुझे आके ये कह देना आसिम भाई कि ये इकोनॉमी कल परसों या हफ्ते बाद, ये लॉकडाउन खत्म करने के बाद खुल आ जाएगी, मैं आपको गारंटी से कहने को तैयार हूँ कि नेक्स्ट 6 months ये इकोनॉमी अगस्त सितंबर तक हिलेगी भी नहीं अपनी जगह से. नहीं, it इट will इज take गोइंग time. It will take time. डाउन. समर्स स्पेशली इन द मिडल ईस्ट, समर्स तो वैसे ही 3 महीने डेड होते हैं. रमजान का सीजन आपका वैसे ही डेड होता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती. सो आज अब रियल एस्टेट सेक्टर खोल दें, मुझे नहीं समझ आती रियल एस्टेट सेक्टर क्यों खुलना है, जब लोग रेंटल्स छोड़कर जा रहे हैं और बड़े अपार्टमेंट्स छोड़ के छोटे अपार्टमेंट्स में ट्रैवल कर रहे हैं कि यार हमारे पास इनकम नहीं है, और कंबाइंड फैमिली सिस्टम में आ रहे हैं कि अम्मी अब्बू हम अकेले नहीं रह सकते, हम अपने भाई घर में आके आपके साथ रह रहे हैं, एंड वी विल जस्ट लिव टुगेदर ड्यूरिंग दिस टफ टाइम, you know. So I don't understand what the real estate sector is going to do while we are talking about social distancing. Theater खत्म हो गया है, sports खत्म हो गई हैं, stadiums वाला business खत्म हो गया है, concerts खत्म हो गए हैं, public gatherings खत्म हो गई हैं, बड़ी weddings, event management का पूरा business dead हो गया है, in which we are also part of it. So मुझे Definitely. बताएं ये सारे का सारा सिस्टम कहाँ पे मूव करेगा. बड़े बड़े पॉप स्टार्स, रॉक स्टार्स, सेलिब्रिटीज जो हैं वो ऑनलाइन मुफ्त में अपने कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं ऑनलाइन करके कि यार चलो वी विल एंटरटेन आवर फैंस एंड मेक श्योर दैट दे रिमेंबर अस दैट वी वर आल्सो आउट देयर. व्हाट्स द फ्यूचर? द फ्यूचर इज अ कंप्लीट, एज आई हैव सेड, इट्स अ कंप्लीट इकोनॉमिक रीसेट. यूएस डॉलर चेंज कर जाएगा. आईएमएफ के पास हर दूसरा मुल्क जा रहा है तो यूएसडी की डिमांड बढ़ रही है. अगर वो 7% पे पहले लोन देता था तो अब एक डाइंग इकोनॉमी को, मरी हुई इकोनॉमी को, जिसमें अगले 1 साल उनको कोई होप नहीं है रिकवर करने की, उसको 15% पे उस रिस्क को कवर करेगा और ज्यादा पैसों पे देगा. सो अल्टीमेटली IMF and US dollars and US, these people are going to clutch different developing countries and different economies. Definitely, definitely. ये सारा करंट सिनारियो है और इस सिनारियो को हमें देख के अपने डिसीजंस लेने हैं. चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट ही, बिकॉज वी कैन ऑलवेज होप, और उम्मीद पे दुनिया कायम है. सो हमारी उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानी करे और इस मुश्किल मरहले से हम सबको निकाल दे और एक बाइज्जत तरीके से हमें एक दोबारा वापस अपनी रूटीन लाइफ में आने की तौफीक अता फरमाए. शफादी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. एनी लास्ट मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव? माय लास्ट मैसेज वुड बी के देखिए, नजासत जो है वो पाकीज़गी से दूर हो सकती है, और ये जो वायरस है ये एक निजस, एक गंदा, एक गलीज वायरस है. इस डर्ट, इस फिल्थ, इट हैज कम आउट ऑफ फिल्थ व्हिच इज इन्फेक्टिंग पीपल एंड इट इज डाइंग. इट इज ईविल, और ईविल जो है उसको हम गुडनेस से ओवरकम कर सकते हैं. सो अगर हमने किसी गंदी चीज को खत्म करना है तो सबसे पाक जो चीज है वो अल्लाह ताला का कलाम है. उससे पाक और बाबरकत कोई चीज नहीं है. सो अगर हम वो पाक कलाम पढ़ें, कुरान करीम पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, दुआएं करें अल्लाह ताला के हुजूर, और एक पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल के ऊपर मिल के अपने आप को रीअसेस करें और अल्लाह के हुजूर हम वो पाकीज़गी, वो मोहब्बत, दिल की पाकीज़गी वो इतनी फैला दें तो ये गंदगी वैसी दूर हो जाएगी. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई बीमारी आती है तो अल्लाह ताला उसका इलाज साथ ही उतारते हैं. तो जो शफा है वो भी अल्लाह की तरफ से ही है. बीमारी मैन मेड वायरस है या अल्लाह की तरफ से है, ये है तो सही. तो इसकी शफा वो भी अल्लाह ताला ने किसी के दिमाग में डालनी है, किसी भी साइंटिस्ट के ऊपर मेहनत कर रहे हैं. सो अल्लाह की तरफ से ही इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी, इसकी ट्रीटमेंट भी आ जाएगी, इसकी क्योर भी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला. हमारी यही दुआ है. इंशाल्लाह तो उसी वक्त अल्लाह की तरफ से आएगी जब हम रिपेंटेंस की तरफ जाएंगे. सो तीन स्टेप्स. नंबर 1, अल्लाह की तरफ रुजू करें, इस्तग़फ़ार करें, मोहब्बत करें, दिलों की मैलों को साफ करें, प्यार मोहब्बत से अपनी फैमिली के साथ रहें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें. नंबर 2, अपने बुजुर्गों के साथ जब आपको ये टाइम मिला और अपनी फैमिली के साथ उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, लर्निंग करें, सेल्फ लर्निंग करें और अपने स्किल्स डेवलप करें, अपने आप को ट्रेन करें. और तीसरी चीज, खुदा के लिए फजूल खर्ची बंद कर दें, लग्जरियस लाइफस्टाइल बंद कर दें और बैक टू बेसिक्स सेव करें, बैक टू बेसिक्स आ जाएं. और आप कम से कम भी अपने अगले 6 महीनों को प्लान करके चलें और पहले से ज्यादा मेहनत करें, पहले से ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ काम करें. और इंशाअल्लाह ताला नेशंस हु वर्क, नेशंस हु स्ट्राइव, अगर गज़वा बदर के ऊपर मुसलमान स्ट्राइव ना करते तो वो कभी भी जंग ना जीत सकते और ना ही अल्लाह की मदद पहुंचती. सो स्ट्राइव करना इज नंबर 1. वी नीड टू स्ट्राइव विद अ स्ट्रेटजी एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो. थैंक यू शफात भाई.
सबको अपने पास रखें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच एट द एंड कि आपने हमें इतना मोटिवेट भी किया और एक होप भी दिखाई कि इंशाल्लाह सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अभी दो तीन चीजें मैं सिर्फ रिकैप कर दूं। आपकी एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, दैट इज थिंग्स वुड मूव टुवर्ड्स द स्पेशलिटी एंड दोज पीपल हु हैव द स्पेशलिटी दे विल they have a room and they can do very good. Second, हमें ऑनलाइन की तरफ आना चाहिए, ऑनलाइन टीचिंग्स की तरफ आना चाहिए and the universities and the schools they have to work on the online model also. So that was like दो बहुत बड़े टेकअवेज थे जो कि प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जिन पे हम आगे चल सकते हैं। इंशाल्लाह अगले किसी और बहुत अच्छे मेहमान के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।